ट्रैवर्सल इन ट्री। ट्री में ट्रैवर्सल करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, pre-order traversal. Second one is post order. Third one is in order. And there is a fourth one of a traversal which is known as level order traversal. इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस पर देख लीजिएगा। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? रूट, देन लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पहले आते हैं। लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, यानी रूट लास्ट में आता है। इन ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड, रूट, देन राइट चाइल्ड। ठीक, अब इसको प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, एग्जांपल समझते हैं। एक ही कोड लिखेंगे सिर्फ हम प्री ऑर्डर का, और इसी प्री ऑर्डर के एक कोड से ये तीनों टाइप के ट्रैवर्सल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है एक, ओके। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा? सबसे पहले हमें ये मिलेगा, रूट यहाँ पे आया, पहले रूट प्रिंट कराओ, इट मींस 1 will be printed, then it will check whether it's the left child is present or not. If yes, it is present, then the node will be 2 and 2 will be printed. Then it will check whether it is left child is present or not. If yes, it is present, then 4 will be printed, and it will check whether it is left child is present or not. If it is not, then the control goes back to 2, and 2 will check its right child is present or not. If yes, it is present, then it will be printed, and then control goes to 5, and 5 will check its left child is present or not. And similarly, the right child is present or not. If the left child is present, 8, yes, and the control goes back to 2, and the control goes back to 1. The left subtree of the whole tree of this tree is printed 1, 2, 4, 5, 8. Now the right portion of this tree will be printed, so it will check whether it is right portion will be is not equal to null. If yes, not equal to null, then the control goes to 3, and 3 will be printed, and it will check whether it is left child is present or not. If yes, it is present, then 6 will be printed, and 6 will check is left child present or not. If not present, then the control goes back to 6, and 6 will check its right child present or not. If it is not, then the control goes back to 3, and 3 will check its right child is present or not. If yes, it is present, then it will print 7, and 7 will check its left child is present. Yes, it is present, which is 9, and 9 will check its left child, which is not present. It is equal to null, so control goes back to 9, and 9 will check its right child, it is present or not. If not, then the control goes back to 9, and 9 will and from 9 the control goes back to 7, and 7 will check its right child, which is 10. If yes, it is present, then it will print it 10, and it will check its left child and right child, which is null, so the control goes back to 1, and this will be returned. And the pre-order traversal of this tree will be 1, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 7, 9, 10, in which 1 is the root, 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8 is our left child's, and 3, 6, 7, 9, 10. 3, 6, 7, 9, 10 is our right child. ठीक, अब इस क्वेश्चन को इसका कोड कैसे करना है ना? मेन क्वेश्चन ही आता है। क्या करो, एक ट्रैवर्सल नाम का फंक्शन बनाते हैं। कौन सा ट्रैवर्सल कर रहे हैं? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर बनाया, इसमें क्या पास किया? इसमें रूट था। ठीक, चेक किया इफ रूट डबल इक्वल टू नल तो नहीं, इफ इट इज नल देन रिटर्न। ओके, फिर हम प्री ऑर्डर में क्या करवा रहे थे? प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट प्रिंट हो रहा था, सो सेम थिंग, प्रिंट एफ क्या, रूट डॉट वेल। उसके बाद क्या आ रहा था? लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट। उसके बाद क्या था? राइट चाइल्ड, तो प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट। प्री ऑर्डर में यही था ना, रूट लेफ्ट राइट, रूट ये रहा, रूट लेफ्ट एंड राइट, सेम चीज, रूट लेफ्ट राइट। अब ये जो यहाँ पे ट्री बनाया, इसी ट्री को रिकर्जन ट्री से समझते हैं कि यहाँ से ये कैसे काम करेगा। कॉपी पेस्ट,
ठीक। इनिशियली हमारे पास रूट 1 आया, ठीक। इसने चेक किया इफ रूट नॉट इक्वल टू नल, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसको हमने प्रिंट करवा दिया, इट मीन्स 1 will be printed, then it will call its left child which is 2. Now 2 will be printed and it will check its left child which is 4, then 4 will be printed and it will check its left child which is null. So the control goes back to 4 and 4 will check its right child. If it is not present, then the control goes back to 4 and the control goes back to 2, and 2 will check its right child whether it is present or not. If not present, then 5 will be printed and the same thing, it will check its left child which is 8, and 8 will check its left child which is not present. The control goes back to 8 and it will check its right child which is not present. The control goes back to 8 and it will goes back to 5, and 5 will check its right child which is not present. So the control goes back to 5 and the control goes back to 2 and 1, 1, 2, 4, 5, 8. Okay. For this tree, the left childs जितने भी हमारे थे वो हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए. इट मीन्स हम यहाँ से हुए थे और ये वाला पोर्शन हमने क्लियर कर लिया फॉर दिस ट्री, है ना. अब हमें राइट वाला पोर्शन क्लियर करना है, तो अब रूट डॉट राइट, इट मीन्स द कंट्रोल गोज टू 3. नाउ 3 will check its left child is null or not. If it is not null, then it will print 6 and 6 will check its left child whether it is present or not. It is not present, so the control goes back to 6 and 6 will check its right child whether it is present or not. If it is not present, then the control goes back to 6 and the control goes back to 3, and 3 will check its right child is present or not. If it is not present, then the control back goes to 7 and 7 will check its left child is present or not. If yes, it is present, then it will print 9 and it will check its left child present or not. If it is not, then the control goes back to 9 and 9 will check its right child which is present or not. If not, then the control goes back to 9 and 9 the control goes back to 7, and now the 7 will check its right child which is 10. So 10 will be printed and 10 will check its left and right child respectively, but it is not present, so the control goes back to 7 and the control goes back to 3 and 3 the control goes back to 1 and it will return. So the final pre-order traversal that we got is 1, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 7, 9, 10 for this tree, in which 1 is our root, 2, 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8 is our left child and rest of it our right child. इसको कोड से देखते हैं. pre-order traversal में हमने क्या किया, void traversal लीड कोड के अंदर हमें लिस्ट रिटर्न करना था. सो हमने सेम कोड किया है, ये देखो, वी हैव डन द सेम कोड, बस हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने क्या किया था, प्री ऑर्डर में बस रूट पास किया था एंड यहाँ पे प्रिंट किया था, यहाँ पे प्रिंट किया था. इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं. सो हमें रिटर्न करना है लिस्ट, सो वी हैव क्रिएटेड एन एरे लिस्ट, इसके हम स्टोर करेंगे. हम ट्रैवर्सल नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम रूट एंड लिस्ट पास कर रहे हैं. यहाँ पे रूट एंड लिस्ट पास किया एंड रूट वी आर चेकिंग रूट इज इक्वल टू नल और नॉट एंड रिटर्न लिस्ट डॉट ऐड. अब यही सेम कोड हम रन करके देखते हैं. इसी सेम कोड से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे लीड कोड के. या इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. ओके, क्या किया है, सेम कोड कॉपी, कंट्रोल सी, क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा था प्री ऑर्डर, ये रहा इन ऑर्डर. इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट देन राइट, लेफ्ट रूट देन राइट. हमने प्री ऑर्डर में क्या किया, जस्ट वेट अ मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल, हमने रूट लेफ्ट एंड राइट. इन ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट रूट
राइट, लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट पहले आना चाहिए, लेफ्ट रूट बीच में रूट आएगा, लेफ्ट रूट देन राइट। एक्सेप्टेड, द सेम कोड, डन। अब इसी सेम कोड से क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या किया, ये वाला लिस्ट बनाया, सेम चीज सेम टू सेम, तीन क्वेश्चन लीड कोड के, तीन क्वेश्चन हो रहे हैं सेम कोड से, बट क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ एक एक लाइन चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने क्या, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट देन रूट, मतलब लिस्ट डॉट एड रूट डॉट वेल, यहां पे होगा, डन, सेम टू सेम कोड, तीन क्वेश्चन लीड कोड के सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 144 and question number 94, and the time complexity of all the traversal, it means pre, post and in order traversal will be big of n, because हम हर nodes पे जा रहे हैं, so the time complexity will be big of n, and the auxiliary space that we are using is big of n, so the time and space complexity of the traversal is big of n.